Welcome, knowledge seekers, to EforEducation, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this curricular series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to EforEducation. So the topic which we are going to discuss today is basically the nationalization policy. पाकिस्तान में किस तरीके से nationalization हुई है, ठीक है जी। सबास्कर भुट्टा साहिबा की बुक है नेशनल टू द पॉइंट इकोनॉमिक्स, उससे हम लोग देख रहे हैं. सो डिफाइनिंग नेशनलाइजेशन refers to the process of government taking control of a company or industry which can occur for a variety of reasons. When nationalization occurs, the former owner of the company may or may not be compensated for their loss in net worth and potential income. Policy of nationalization जो है, we have a straightforward proposal. If they want public money, we want public control. It's that simple. ये माइकल हुरॉग्स पेरिस जो है ये उनकी स्टेटमेंट है. Generally speaking, nationalization means the control of industry by state when the government take under its control as owner and privately run the business. Then this act is known as the act of nationalization. कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको गवर्नमेंट ओवरटेक कर ले, उसको अपने तहवील में ले ले, ये आपके पास नेशनलाइजेशन है. पहले वो किसी प्राइवेट बंदे की थी, अभी वो हुकूमत की हो गई. द स्टेट बिकम द ओनर ऑफ नेशनलाइज्ड कंसर्न. द स्टेट एंड द गवर्नमेंट बिकम responsible for the loss and the profit of the nationalized business. A few years ago in our own country, life insurance business was nationalized. ठीक है जी. Then 14 banks were nationalized. Bus services on different routes have also been nationalized. आपके वालिदैन में से किसी से आप पता कर लें, GTS चला करती थी, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो चला करती थी. ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी नेशनलाइज हुई थी. और ये हुई कब थी? ये आपके पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी उसके तहत हुई थी. मैनी अदर इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कंसर्न्स इंक्लूडिंग कोल माइंस हैव बीन टेकन कंट्रोल ओवर बाय द गवर्नमेंट. Some people are against nationalization. They say that by nationalization the government takes away the right of the citizens to do any business which they think themselves is to be capable of. This is against the spirit of democracy, but it is not so. Nationalization and democracy can go hand in hand. They are not opposed to each other. Okay. Nationalization become the economic creed of modern times. Its advantages are many. First, private ownership of big businesses and business concerns gives rise to the two clauses. On one side, there is a big capitalist who own and manage the control of the firm and the mills. On the other hand, on the other are the poor laborers. The capitalists become richer while the laborers grow poorer. Nationalization removes exploitation. It reduces inequality. The distribution of wealth becomes uniform and just. Secondly, under private ownership, competition is very keen. Thus, big and powerful capitalists try to crush their small rivals. This is against national interests. Nationalization curbs unhealthy competition and checks करप्शन. ठीक है जी, उसके ऊपर होगा. उसके बाद आपके पास है कि देयर आर सर्टन बेसिक इंडस्ट्रीज विच मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट पर्सन्स. दे मस्ट बी रन बाय द गवर्नमेंट. प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशंस, एटॉमिक एनर्जी और some other industries in such public utility services like railway, electricity, oil, natural gas, water, aviation etc. are some industries. In such production work, the service of the public is main motive and not the earning profit. We are sorry to note that the number of the public sector's undertaking are not doing commendable works. There are today a number of autonomous corporations and they have not succeeded in increasing production. They are incurring heavy losses. They must face stiff competition from the private enterprises so that their efficiency may be increased. The spirit of the competition is the great good to the nation. आपके पास PIA है, पाकिस्तान रेलवे है, ठीक है जी, पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है आपके पास. ठीक है, बहुत से ऐसे वो हैं कि जिसमें
आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इन्वॉल्व तो है, लेकिन इंतहाई हद तक जो है वो फेल है उसमें, ठीक है, उसमें उनको कोई कामयाबी नहीं है, बिकॉज वो कोई एज सच उनकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है वहाँ पे। अच्छा जी, all is not good with nationalization. If the state begins to nationalize different businesses, concerns from time to time, it kills private enterprise. Private person do not invest in the industries lest they be nationalized. जाहिर है इसी डर से कि यार आज मैं अपनी ज़िंदगी की कमाई जो है वो मैं लगा रहा हूँ कोई बिजनेस ओपन करने के लिए, और कल को जो है गवर्नमेंट को कोई ख्याल आए और वो सारा सारा बिजनेस जो है अंडरटेक कर ले, तो मुझे तो कोई इंसेंटिव ना मिला, ठीक है जी। फर्दर विद ग्रेजुअल नेशनलाइजेशन द स्टेट बिगेन टू एक्वायर ग्रेटर एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर द लाइफ ऑफ द पुअर। इन द लॉन्ग रन इट लीड्स टू कंप्लीट नेशनलाइजेशन टू द इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। इट मींस ब्रिंगिंग द डिक्टेटरशिप फॉर्म टू बैकडोर। सिंपल सी बात है। स्टेट देखिए डेमोक्रेसी में हमेशा ये होता है कि जी आपको हर एक इंसान को जो है ना वो आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। एवरीवन शुड हैव द राइट टू हैव हिज ओन बिजनेस, ठीक है। अगर वो बिजनेस करता है और स्टेट जो है वो बिजनेस अपने उसको कैप्चर कर लेती है, तो ये स्टेट की ऑपरेशन में आएगा, जो कि डिक्टेटरशिप में आ जाती है, ठीक है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट मैनी प्राइवेटली ओन्ड कंसर्न्स हैव ओनली worn out and outdated machineries। ये भी एक हकीकत बात है। पाकिस्तान स्टील मिल हमारे पास है, पड़ी हुई है, बस नाम है बिल्डिंग में, उसमें लोग रह भी रहे हैं, लेकिन वो उसकी कोई प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि आउटडेटेड मशीनरी है उसकी, ठीक है। Hence to nationalize such industries is not profitable, so new industries should be established instead of taking over the old ones। The public sector should be enlarged and strengthened, but the private sector must also be encouraged and helped to tide over the crisis which it may be facing। उसके बाद आपके पास अब भुट्टो के दौर में आपके पास नेशनलाइजेशन हुई थी, ठीक है जी। और भुट्टो कहते हैं कि आई हैड मेड अ प्लेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू इम्प्लीमेंट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, आई एम नाउ बिगिनिंग टू रिडीम द प्लेज, ठीक है जी। नेशनलाइजेशन इज अ टर्म यूज व्हेन द गवर्नमेंट टेक कंट्रोल ऑफ Nationalization was a policy that was implemented by Zulfikar Ali Bhutto. Bhutto, according to his promise, restored the economic order that was badly shaken by the war, attracted toward it. In Ayub's regime, wealth was concentrated in few hands that led to the visible class difference in the society. It created hatred for the upper class amongst the masses. Bhutto tried to overcome the situation by nationalization. The party had programmed in its manifesto to nationalize the industries gradually. After 2 months of Bhutto resuming office under the economic reforms order that was paused in January 1972, now ये बात आपको याद होनी चाहिए कि 1973 के आइन के पास होने तक भुट्टो जो है वो एज अ सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जस्ट इमेजिन, सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। और वहाँ पे जो है उस वक्त वो मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जो हैं वो पास कर रहे होते थे, ठीक है। कोई उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती थी आपकी पार्लियामेंट में, बस डायरेक्ट जो है उन्होंने कोई एक ऑर्डर पास कर दिया एंड दैट्स इट। द गवर्नमेंट टुक ओवर टू इंडस्ट्रीज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। द इंडस्ट्रीज वर put under these basic categories: iron and steel industries, पहला; basic metal industries, heavy engineering industries, heavy electrical industries, assembly and manufacture of motor vehicles, tractor plants, assemblies and manufacturers, heavy basic chemicals, petrochemical, cement, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑयल रिफाइनिंग जो है ये आपके पास टोटल 10 उसमें जो है उनको डिवाइड कर दिया गया था। इट वाज द फर्स्ट स्टेप to the policy of nationalization in September 1973 when 26 vegetable ghee units were nationalized, ठीक है जी। Banks were also nationalized in 1974। they were placed in the hands of the government on the financing of bank। 1976 में 300 small units of cotton ginning, rice husking, flour milling were also taken in the control of government, ठीक है जी। अब ये ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं कंट्रोल। The exports and imports were also taken under the control of the government through trading corporation. They wanted to ensure the distribution of wealth and prosperity of layman. However, the policy of nationalization started by Bhutto had many defects. It caused a great damage to the private sector. Investments in the private sector was also finished. After the military coup of 1977, Chief Martial Law Administrator denationalized the
इंडस्ट्रीज, और इस वक्त आपके जो चीफ मार्शल लॉ थे वो ज़िया था। ठीक है जी। नेशनलाइजेशन आफ्टर 1988, इन नवंबर 1988 बेनज़ीर भुट्टो एंड पाकिस्तान पीपल पार्टी कम टू power. During the election campaign 1988, Benazir Bhutto promised the industrialized sector to end nationalization program and to carry out industrialization by means other than the state intervention. But controversially, Benazir Bhutto did not authorize the directives to carry out the denationalization programs or liberalization of the national economy. No nationalized units were privatized. Only few economic regulations were reviewed, although limited scale privatization continued under Benazir Bhutto's second government. The UBL Pakistan, yani United Bank Limited, and the railway consortium was completely nationalized by Benazir Bhutto before being dismissed in 1966. During the second government, the People Party intensified the government control on Pakistan Railway and Pakistan Steel Mills. All shares were kept under the government management and or ownership. In 1988, the Prime Minister Muhammad Nawaz Sharif imposed economic emergencies after performing nuclear deterrence in direct response to इंडिया का जो वो था न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके ऊपर। ऑल स्टेट ओन्ड corporations and private sector industries assets were frozen by Nawaz Sharif after ordering freeze the private assets under government control in order to prevent the financial collapse। क्योंकि जाहिर है उस वक्त पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े ख़तरात का सामना था। मतलब आप लोग उस वक्त न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसका तो बिल्कुल नामुमकिन था कि आप जो है उसके टेस्ट कर लें। ठीक है, अमेरिका की तरफ से बड़े मसाइल थे और जाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती ही अमेरिका के दम पर है, तो इसलिए ये ख़तरा था कि सारे के सारे लोग जो हैं या सारे के सारे जो प्राइवेट सेक्टर है वो निकल जाएंगे मुल्क से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डी नेशनलाइज कर दिया सब कुछ, सॉरी नेशनलाइज किया था उनके एसेट्स को। From 1999 to 2001, the nationalization program was swiftly ended and effectively came to its end under 2011. Until 2011, the nationalization program was again promulgated by the Prime Minister Yusuf Raza Gilani on December 5, 2011 in order to secure and rescue the former state-owned enterprises। ठीक है जी। उसके बाद अब आपके पास नेशनलाइजेशन के कुछ आपके पास एडवांटेजेस हैं, ठीक है जी, फिर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उनको आप लोग ज़रा देख लेते हैं। इधर एक बात बताना ज़रूरी है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने नेशनलाइजेशन पॉलिसी लाए थे तो उसमें बेसिकली जितने भी प्राइवेटली हेल्ड शेयर्स ऑफ रेलवे एंड पीआईए और स्टील मिल के थे उनको उन्होंने क्या कर लिया था, नेशनलाइज कर लिया था। एडवांटेजेस ऑफ नेशनलाइजेशन को अगर हम लोग देखें तो यू विल सी एन अदर रीज़न फॉर नेशनलाइजेशन वाज दैट प्राइवेट ओनरशिप मेंट फ्रेगमेंटेशन। ठीक है जी। पहला इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमी ऑफ स्केल्स, bigger is better, which means that the prices to the consumer were relatively lower than the number of the small firms. A monopoly owned, run and controlled by the government stopped and consumers being exploited. इसके अलावा आपके पास government managed the economy by controlling the important industries. The government invested money and made their service more efficient to some extent. The companies owned and run by the people for the people took social benefit into account and social security benefits increased. उसके बाद आपके पास डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो लो परफॉर्मेंस होती है। ठीक है जी। व्हेन ओनरशिप इज पब्लिक सेक्टर द एम्प्लॉयज डू नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट बट फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी जो है उससे आपके पास क्या होती है, पुअर रहती है, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता होता है कि भाई काम जितना भी हम लोग करें हमने हाजिरी लगा के आ जाना है, तनख्वाह हमें हर महीने के महीने लग जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि हमारी जॉब सिक्योर है। ठीक है जी। Similar happened in the case of Pakistan. Workers and employees lost interest and the performance remained low. जब देखिए हर एक चीज़ जो है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास पैसा। ठीक है जी। जब आपके पास ये चीज़ आपको कंफर्म हो जाए कि यार मेरी जो जॉब है वो सिक्योर है, तो फिर आप काम नहीं करते, आप एफिशिएंट नहीं रहते। लैक ऑफ कंपटीशन होता है, कंपटीशन जो है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है फॉर डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। नेशनलाइजेशन डिक्रीजेज द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, फेवरेटिज्म इसमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। द मैनेजमेंट ऑफ नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड जॉब्स टू द लीडर्स favored person because the political leaders had influence upon the state authorities. Conclusion की तरफ जाए तो nationalization may not have succeeded back then, but
we cannot consider it's a failure completely without closer examination. It was not nationalization that failed, rather the way it was implemented led to its failure. First round of nationalization was a relative success when Bhutto governments nationalized the commanding heights of economy, insurance, banking and commerce sector, as well as heavy industries जो थी उसको भी उन्होंने की. The mistake that Bhutto made was handing over of these entities to the bureaucracy instead of professional corporate management. Our bureaucracy was the steel frame of British Empire, but always been incapable of running businesses. By not bringing the professional people to run the nationalized sector, the first round of nationalization failed due to corrupt bureaucracy and pressure of trade unions. Second round of nationalization जो था आपके पास, उसमें क्या था? Nationalization उसमें जो है भुट्टो जो है made mistake nationalization small medium industries. This led to annoying the small traders, who then became the backbone of the Pakistan National Alliance movement. PNA बनी थी आपके पास, ठीक है जी. सारे के सारे जितनी भी पार्टीज थी वो आपस में मिल गई थी. सेम इज़ द केस जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी, इन्होंने भी सबको डंडा किया हुआ था, ठीक है, न किसी को छोड़ते थे न क्या करते थे, कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत नहीं देते थे. तो फिर पीडीएम बनी थी, ठीक है जी. पीडीएम मौलाना साहब लेके आ गए थे और उसके बाद कहते थे कि यार हम लोग तो नहीं लाए वीओएनसी, वो तो किसी और के कहने पर लाए थे. फिर बाद में वहाँ से तरदीद आई है तो कहते हैं कि जी मैंने नाम गलती से ले लिया. सो खैर बहरहाल PNA movement उनके खिलाफ चली, which also included the proprietor class who were already against Bhutto because of land reforms and nationalization. ठीक है जी. Interesting facts को अगर देखा जाए तो total GDP per capita stood between 8.4 in 1970 and 8.3 in 1993 to 96. The period of nationalization जो है इसमें nationalizing school and colleges in 1972 was a good move by Bhutto. It was प्राइवेट स्कूल्स कॉलेज इन पाकिस्तान. अच्छा बहरहाल एक अच्छा मूव था एजुकेशन को करने का, ठीक है जी. मोस्ट प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन पाकिस्तान वर रन बाय द मिशनरीज. वंस दे वर नेशनलाइज्ड मोस्ट मिशनरी टीचर्स लेफ्ट एंड वी वर अनएबल टू रिप्लेस देम विद द क्वालिफाइड स्टाफ. अब इसमें भी ये मसला बना था. The lack of teacher training programs was another factor that contributed to fall in the standard of public education. Some of the nationalized institutions have been completely or partially privatized in recent years, leading to an increase in fees. Lack of planning resulted in chaos. Education is the right of every child, but low literacy rate in Pakistan is a proof that our state has failed in making it either free or at very least affordable to all. High literacy rate can lead to an end of child and bonded labor and development. So it can be concluded that nationalization itself cannot not a bad policy, but due to some mishandling it failed in Pakistan. Nationalization has its advantages, and thus sensitive industries should be nationalized in order to promote public interest. This was all about today. We'll see you next time. Allah Hafiz.